Hi everyone. Today we will discuss a few most important MCQs on our law of torts. Okay, as you all know that in the upcoming All India Bar examination, in syllabus, maximum 5 marks, that is 5 questions will be asked. Okay, each questions will carry 1 mark. Okay, in tort. Okay, including Motor Vehicle Act and Consumer Protection Act. So, 5 questions will be asked. Question will be asked so this is very important part for our preparation. Okay, so without any further delay, let's start today's session. So the first question is our tort is a violation of what? Options are right, a right in personam, a right in rem, both right in personam and right in rem, neither a right in personam nor a right in rem. Okay, so the correct option would be our option B, that is right in rem. Okay, right in rem, that means tort is a violation, tort is a violation of right in rem. उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है tort is a violation of rights. Law of tort is towards the people at large, towards the people at large. Okay, so right in rem means क्या है? Towards the people at large. Okay, so the correct option would be here in this case option B. That means option B would be the correct answer. Okay, so right in personam क्या होगा बोले तो contract is a right in personam. Contract is a right in personam. personam. Okay, so now move to next question. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर tort. Tort implies a twisted or tortuous. Tortuous options are consent, volition, conduct, and deterrence. So the correct option would be option C. That is, tort. Tort is a twisted or tortuous act or conduct. Twisted or tortuous act or conduct. Okay, because देखिए, because as per the provision of section 2M of the limitation act. Okay, limitation act. टॉट का मीनिंग क्या है? टॉट का मीनिंग क्या है? It is a wrongful act. Okay, it is a civil wrong. It is a civil wrong. Okay, it is a civil wrong which is not which is not exclusively exclu which is not exclusively a breach of contract or breach of trust. A breach of contract or a breach of trust or breach of trust. ओके, सो ऑफ द लिमिटेशन एक्ट में टॉट का डिफिनेशन दिया गया है जहाँ पर बोला गया है इट इज़ ए सिविल रॉन्ग. ओके, विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी नहीं है. सो देखिए, सो इधर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था टॉट इम्प्लाइज द ट्विस्टेड और टॉर्टुअस कंसेंट, वॉल्यूशन, conduct. Okay, so the correct option would be option C. So in this case, option C would be the correct answer. Okay, so now move to next question. Next question is our law of tort has developed mainly through which of the following? Options are customs and precedents, judicial decision, enactments, all of the above. So the correct option would be option B, that is judicial decision. Okay, that is judicial decision. That means
लॉ ऑफ टॉर्ट का कोई परमानेंट कोई भी एक्ट या कोई भी लेजिस्लेशन नहीं है, ठीक है। सो लॉ ऑफ टॉर्ट डेवलप कैसे हुआ? लॉ ऑफ टॉर्ट डेवलप्ड हुआ मेनली थ्रू द कोर्ट डिसीजन, कोर्ट जजमेंट। ओके, देयर इज नो स्पेसिफिक act or we can say legislation legislation uh, of tort, okay। but tort develop कैसे हुआ? tort developed mainly थ्रू द जुडिशियल डिसीजन, जितना भी कोर्ट का जजमेंट हुआ, कोर्ट का जितने डिसीजन लिया, सो उसी सभी में से निकल के आ गया हम लोग का टॉर्ट। व्हाट इज टॉर्ट? टॉर्ट इज ए सिविल रॉन्ग। ओके, व्हाट इज टॉर्ट? व्हाट इज टॉर्ट? टॉर्ट इज नथिंग बट ए सिविल wrong, okay। In this case option B would be the correct answer, okay। Now move to next question. The propounder of pigeonhole theory is options are Salmond, Winfield, Clark or Lindsay and Austin. So the correct option would be option A, that is Salmond। The propounder of the pigeonhole theory कौन है? वो our Salmond, okay। So here in this case option A would be the correct answer। So now moving to next question. Next question is UB just EB remedium means what? Options are why there is a right, there is a remedy. Why there is no remedy without a wrong. There is no wrong without a remedy. There is no right without a remedy. So the correct option would be why there is a right, there is a remedy. That means UB just EB remedium का मीनिंग क्या है? Why there is a right, there is a remedy। उसका मतलब क्या है? If there is any infringement of our legal right, okay, legal right, there is a remedy, okay, to protect our right। उसका मतलब क्या है? ईवी जस्ट ईवी रिमीडियम का मीनिंग क्या है? इफ देयर इज एनी वायलेशन ऑफ आवर लीगल राइट, दैट मीन्स इफ एनी violation, if any violation of our legal legal rights legal rights there, if any violation of our legal right, there is a remedy, there is a remedy, there is a remedy to protect our right, okay, protect our right। so इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि ईवी रेमेडियम रेमेडियम। So if we just every demand का meaning क्या है? If there is any violation of any legal right, there is a remedy to protect that right, okay। so देखिए, so in this case क्या होगा? In this case option A would be the correct answer, okay। so now move to next question, okay। Next question is maxim injuria sine damno means what? Injuria sine damno means injury without damages। इसका मतलब क्या है? इंजुरी without damages, okay। इंजुरी विदाउट damages, okay। तो इंजुरी मीन्स इंजुरी हुआ बट विदाउट डेमेज नहीं हुआ। सो इसका मतलब क्या है? देखिए ऑप्शन है वायलेशन ऑफ लीगल राइट, देखिए वायलेशन ऑफ लीगल राइट, ओके, विदाउट एनी damages। Option B, violation of legal right with damages, damage without violation of legal right, no damage, no violation of legal right। So the correct option would be in this case option A, that is violation of legal right without any damages। So in this case क्या होगा? Option A would be the correct answer। That means injuria sine damno means injury without damages। Let's take an example। सपोज किसी एक पर्सन का वोट देने का राइट है, सभी लोगों का ही होता है एक्चुअली। तो सपोज एक पर्सन वोट देने के लिए जा रहा है, ठीक है। सपोज रास्ते में उसको रोक दिया गया कि ही कैन नॉट वोट, ओके। सो इन दिस केस जिस पार्टी के लिए वो वोट देने जा रहा था वो तो वोट दे नहीं पाया, बट फिर भी जो जिस पार्टी के लिए वो वोट देने जा रहा था वो पार्टी तो जीत गया, ठीक है।
So this is an example that injuria sine damno, that means इंजरी तो हुआ, दैट मीन्स उसका जो राइट टू वोट उसने तो वो एंजॉय नहीं कर पाया ना, स्टिल जिस पार्टी के लिए वो वोट देने जा रहा था वो पार्टी जीत गया. सो इन दिस केस क्या हुआ, इंजरी सिने डेमनो मीन देयर इज ए वायलेशन ऑफ लीगल राइट, उसका राइट टू वोट का ये वायलेशन हुआ, बट फिर भी क्या हुआ, जिस पार्टी के लिए वो वोट देने जा रहा था वो पार्टी जीत गया. सो that means in this case we can say that injuria sine damno, that means injury without damages. Okay, so now moving to next question. Next question is देखिए, the maxim injury sine damno has been explained in which of the following cases. Options are Donoghue versus Stevenson, Winterbottom versus Wright, Ashby versus White, and Lumley versus Gay. So the correct option would be option C, that is Ashby versus White. So in this case, option C would be the correct answer. Okay, now move to next question. In the next question देखिए, in a tortious liability, okay, options are state of mind of a person is relevant, state of mind of a person is irrelevant, state of mind is relevant in some cases where is irrelevant in other cases, and neither A or B. So the correct option would be option C, that is state of mind is relevant in some cases while state of mind is irrelevant in other cases. So in this case, option C would be the correct answer. Okay, so now to next question. Next question is malice in law means. Malice in law means what? Options are wrongful act done intentionally but without just cause or excuse. Option B, wrongful act done intentionally with just cause or excuse. Wrongful act done intentionally with good motive. Wrongful act done intentionally with evil motive. So the correct option would be option A, that is wrongful act done intentionally but without just cause or excuse. इन लॉ का मीनिंग यही है कि wrongful act done intentionally but without just cause or excuse. Okay, so in this case option A would be the correct answer. Okay, now move to next question. Next question is our under the law of tort. Okay, the damages are what? Options are देखिए, liquidated damages, limited damages, unliquidated damages, unliquidated but limited damages. इसका मतलब क्या है देखिए, लॉ ऑफ टॉर्ट में जो भी डैमेजेस होता है उसका आंसर क्या होगा देखिए, उसका आंसर होगा दैट इज ऑप्शन से, दैट इज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. क्यों देखिए, in the law of tort all the damages, that means compensation are decided by whom, are decided by the court. Okay, this is not fixed. Okay, this is not fixed by the both parties, that is the plaintiff and the defendant. कौन कौन सा पार्टी है, प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ एंड दूसरा है डिफेंडेंट, डिफेंडेंट. ओके, इजंट इट, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट. ठीक है. सो देखिए, सो जो द लॉ ऑफ टॉर्ट में जितना भी डैमेजेस दिया जाता है, सो दिस आर ऑल डिसाइडेड बाय द कोर्ट एंड दैट्स व्हाई दिस इज अनलिक्विडेटेड. बट ऑन द अदर हैंड देखिए, इन द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑल द डैमेजेस आर लिक्विडेटेड डैमेजेस. क्यों बोले तो बिकॉज इन दिस केस द डैमेजेस और द कंपनसेशन आर फिक्स्ड बाय बोथ द पार्टीज, बाय both the parties, isn't it? Both the parties. That's why contract law of liquidated damages, but law of tort is a unliquidated damages, because in this case the compensation or the damages are not fixed by both the parties. Okay, but in this case all the damages or the compensation are fixed by whom, by the court. Okay, so in this case option C would be the correct answer. So now going to next question. Constitute a tort, there must be some act or omission on the part of the defendant. The act or omission should result in violation of legal right vested in the plaintiff. Both A and B. So the correct option would be, as you know, that option C. That is टू कॉन्स्टिट्यूट टॉट. टॉट एक एस्टेब्लिश करने के लिए हमको क्या चाहिए, देयर मस्ट बी सम एक्ट और ओमिशन, दैट मीन्स एक्ट कोई भी एक कार्य और ओमिशन, ओमिशन जो भी काम करना चाहिए था, ओके, एज पर द लॉ वो किया नहीं गया, ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट, ना, जो अगेंस्ट होम केस फाइल किया जाता है डिफेंडेंट. ओके,
और ऑप्शन बोला है द एक्ट और ओमिशन, एक्ट और ओमिशन दैट मीन्स कोई भी एक एक्ट और ओमिशन दैट मीन्स कोई भी ऐसा कोई काम जो एज पर लॉ किया जाना चाहिए था बट किया नहीं गया, शुड रिजल्ट इन द वायलेशन ऑफ ए लीगल राइट वेस्टेड इन द प्लेंटिफ दैट मीन्स कोई भी एक ऐसा काम किया गया है और कोई भी एक ऐसा काम नहीं किया गया है जो एज पर द लॉ करना चाहिए था। ओके, सो जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से देयर इज ए वायलेशन ऑफ द लीगल राइट, देयर इज ए वायलेशन ऑफ द लीगल राइट of the plaintiff. So in this case there will be a tort. Okay, so in this case option C would be the correct answer. Now moving to next question. This is the next question and the today's last question. Okay, question is the decision in Ashby versus White is furthers what options are Salmon theory, Winfield theory, both A and B, neither A and B. So the correct option would be our option B, that is Winfield theory. That means the decision of Ashby versus White uh, further which theory, that is Winfield theory. So in this case option B would be the correct answer. So this is for all today. If you liked this lecture, please like this video and subscribe this channel. Okay, so thank you very much. So see you in the next video.